नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अथर्वा मेडकरी ऑल्सो नाउन एज वेंकटेश। आप सभी लोगों का कृष्णाई प्री मेडिकल एंड मेडिकल एकेडमी इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ए कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेटिव एंड नॉन डेफिनेटिव टाइप के होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स either यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर होते हैं। ग्रोथ सेल डिवीजन द्वारा होता है। सेल डिवीजन कैसे होती है, ये हमें स्क्रीन में दिखाई गई एनिमेशन द्वारा पता चलता है। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मास। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमेबा, इसमें दो न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। प्लांट्स ग्रो थ्रू सेल डिवीजन थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ सर्टेन एज तक ही होती है। After that, cell division occurs only in the body has to replace lost cells in a certain tissue. सभी ग्रो होने वाली चीजों को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, रॉक का साइज बढ़ता है जब सैंड उस पर डिपॉजिट होती है। दिस ग्रोथ इज एक्सटर्नल। Growth in living organism is internal. So, growth is a characteristic of living organism are non-definitive. Reproduction is important characteristic of living organism. In unicellular organism, reproduction and growth are synonymous, as both lead to increase in number of cells. In multicellular organism, reproduction leads to the creation of an offspring. These organisms reproduce sexual या फिर asexual. Sexual reproduction can be seen in higher organisms like man and animals. Asexual reproduction seen in lower organisms through budding in yeast. फ्लैटवर्म के अंदर फ्रैगमेंटेशन होता है। Sterile worker bees are not capable of reproducing. इसका मतलब ये नहीं कि यह नॉन लिविंग्स है। So, reproduction is non-definitive characteristic of living organisms. Metabolism is also characteristic of living organism. Organisms chemicals से बनते हैं। Chemicals are constantly produced in living beings and convert it into biomolecule are called metabolic reaction. Sum total of all reaction is known as metabolism. कुछ chemical reaction can also be immediate in laboratory. Such isolated reaction taking place in vitro are not considered living organism but classified as living reaction. इससे हम बोल सकते हैं कि metabolism is a definitive characteristic of living organism. इसके बाद cellular organization. It is also characteristic of living organism. Cellular organization, it is not observed in non-living.
Hence, cellular organization यह भी definitive characteristic of living organism. Consciousness is another feature of living organism. We know that all living organisms sense and respond to an environmental stimuli such as light, water, temperature. सनफ्लावर का फेस ऑलवेज सूरज की तरफ होता है. Human also respond to external stimuli. विंटर में ह्यूमन वूलन पहनते हैं क्योंकि अपनी ठंड से रक्षा हो सके. Non-living objects don't respond to external stimuli. So, consciousness is definitive characteristic of living organism. Metabolism, cellular organization, consciousness. It is definitive characteristic of living being. अर्थ के ऊपर मिलियंस टाइप ऑफ फंगाई, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स है. द रेंज एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म increases as the increase in area of observation. Each different kind of plant animals represent a species. Species is the group of similar individual. हमें पता है कि आज अर्थ पर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज प्रेजेंट है and this number ever increasing as we explore new areas and even old ones. The number and type of organism present on earth is refers to as biodiversity. Plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country, so to avoid this confusion, naming of living organism is known by the same name all over the world. This process is nomenclature. Naming is only possible when organism is described correctly, and we know to what organism the name is attached to. This is identification. आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस इजी होने के लिए साइंटिस्ट ने साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम दिया है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. Scientific name for plants are based on principle and criteria जो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिए गए हैं. फॉर एनिमल्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN में दिए गए हैं. Scientists and biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. साइंटिफिक नेम की वजह से सारा कंफ्यूजन दूर होता है सिर्फ साइंटिफिक नेम्स से. फॉर एग्जाम्पल पीपल ट्री. पीपल ट्री जो होता है इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलीजियोसा. साइंटिफिक नेम 2 कंपोनेंट में होते हैं. जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. फाइकस इज a generic name. Religiosa is specific epithet.
This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This system is given by Carlos Linnaeus, also called father of taxonomy. कभी कभी क्या होता है, साइंटिफिक नेम के एंड में साइंटिस्ट के नेम का एब्रिवेट फॉर्म लिखा जाता है। Scientific or biological names are generally derived from Latin. जब साइंटिफिक नेम हैंड रिटन होता है तब उसके नीचे अंडरलाइन होती है, और जब प्रिंटेड होता है तब इटैलिक्स में नेम होता है। First letter of genus is a capital letter and first letter of species is a small letter. The systemic arrangement of organism on the basis of similarities and differences is called as classification. For example, plants, animals, roses, flowers, and dogs. Each group has specific characteristics and convenient categories. They help us to study organisms. The scientific term given for these categories is taxa. Cat यह मैमल है, and all mammals यह animals होते हैं. Therefore, cat, mammal, and animal represent taxa at a different level. The branch of biology which deals with the study of classification of plants and animals is called as taxonomy. Scientific study of similarities and differences between different kinds of organisms and their relationship is called as systematics. Systematic include identification, classification, nomenclature, and evolutionary relationship among organisms. डाइवर्स वर्ल्ड में इजी आइडेंटिफिकेशन, स्टडी, क्लासिफिकेशन के लिए नोमेनक्लेचर बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलियन टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स की स्पेसीज है और दिन ब दिन न्यू स्पेसीज की डिस्कवरी हो रही है। Taxonomists have classified in a hierarchical structure that consists of ranks or categories. Every category is referred to as unit of classification and is commonly termed as taxon. Is a part of taxonomic arrangement is called taxonomic category, and all categories together taxonomic hierarchy. लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने में तकलीफ होती है, इसलिए वी नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू क्लासिफाई देम. These also help to identify the similarity and dissimilarity among the same and different kinds of individual organisms. Organisms are classified using common categories such as kingdom,
phylum or division, class, order, family, genus एंड species। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को ब्रॉड कैटेगरीज भी कहते हैं। स्पेसीज इज अ बेसिक रैंक इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होते हैं। We can distinguish one species from another closely related species based on morphological characters। मार्केट में मैंगोज के अलग अलग स्पेसीज अवेलेबल है। रोज के भी अलग अलग स्पेसीज गार्डन में अवेलेबल है। इसके बाद की कैटेगरी है जीनस। Genus is a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। प्लांट्स में बनियान और पीपल ट्री में कुछ समानता है, इसलिए ये दोनों सेम जीनस में हैं। Genus Panthera differs slightly genus Felis, which includes cats। इसके बाद की कैटेगरी है फैमिली। फैमिली हैज a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species। Example: orange, lemon, and grapefruit are belong to family Rutaceae or citrus family। इसी तरह lion, tiger, leopard, cat are belong to family Felidae। Cat and dog exhibit some similarities and some differences। They are separated into two different families, Felidae and Canidae respectively। इसके बाद की कैटेगरी है ऑर्डर, which is collection of related families। The number of similarities is less than that seen in a family। For example, order Lepidoptera। इसके अंदर बटरफ्लाई एंड मॉथ होते हैं। Belongs to family Papilionidae and Ctenidae respectively। इसी तरह फैमिली Felidae and Canidae are included in order Carnivora। In plants, family Convolvulaceae and Solanaceae are included in order Polymonales। इसके बाद की कैटेगरी है क्लास। This category includes related orders। Monkey, gorilla, and gibbon are included in order Primata। Tiger, cat, and dog are included in order Carnivora। Order Primata and Carnivora are included in class Mammalia। Phylum or division is the next category। Animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals have a common feature like presence of notochord and dorsal haloneural system, and thus categorized as phylum Chordata। All flowering plants are categorized under division Angiospermae। Highest taxonomic category is kingdom। सभी एनिमल्स किंगडम एनिमलिया में आते हैं और सभी प्लांट्स किंगडम प्लांटी में आते हैं। जैसे जैसे हम स्पेसिस टू किंगडम तक जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स आर डिक्रीजेस। धरती पर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अस्तित्व है। They have classified into convenient category
is based on their characteristics. This classification process called taxonomy. Study require careful identification of organism for laboratory, field study, and plant and animal specimens. Taxonomic studies are useful in agriculture, forestry, industry, and biodiversity. बायोलॉजिस्ट ने टैक्सोनॉमिक स्टडी में हेल्प होने के लिए न्यू टेक्निक्स का निर्माण किया है, उसे टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क की यह टैक्सोनॉमिकल एड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed, and preserved on sheet, labeled and systematically arranged based on universally accepted system of classification. For use in scientific study, details like date and place of collection, the English, local and botanical names, the family and collector's name ये सब recorded होता है। Herbarium specimen used as a reference material in a taxonomic study. इसके बाद taxonomical aids में botanical garden आते हैं। बॉटनिकल गार्डन में डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स अवेलेबल होते हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कंजर्वेशन एंड डिस्प्ले एंड एजुकेशन। ईच प्लांट हैज लेबल्ड विथ बॉटनिकल एंड साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। सम फेमस बॉटनिकल गार्डन्स एट न्यू इन इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन एट हावड़ा इन इंडिया, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट लखनऊ इन इंडिया। Biological museums are set up in educational institutes. Museums have collection of preserved plant and animals which are used to study and reference. They are preserved in jar in preservative solutions or dry specimen. Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. Larger animals are usually stuffed and preserved. It have collection of skeleton of animals. Taxonomical study करने के लिए zoological park की भी help होती है। These are places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. इसके बाद टैक्सोनॉमिकल एड्स में आते हैं बायोलॉजिकल कीज। इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। इट आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कॉपलेट। इट रिप्रेजेंट चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। इसका रिजल्ट है पहले में एक्सेप्टेंस है तो दूसरे में रिजेक्शन आता है। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose. ऑदर्स में फ्लोरा, मैन्यूल्स, मोनोग्राफ यह आते हैं।
Flora is a document contain information about plant found in particular area. Manual are useful in providing information for identification of name of species found in area. Monograph contain information about on any one taxon.